Good morning folks, this is day 4 of my trip. Right now I'm in Kochi और मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अब मैं जा रहा हूँ वापस बीच पे। अभी मैं हूँ चाइनीज़ फ़िशिंग नेट पे। ये टेक्निक है फ़िशिंग के लिए जहाँ पे आज के फ़िशरमैन काफ़ी सारे जो कि शोर पे ही फ़िश पकड़ते हैं। आज के टाइम में फ़िश बहुत कम हो चुका है। एज़ पर देम बरसात के मौसम में फ़िश बहुत ज़्यादा होती है। आज ये सिर्फ बस इसको टूरिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। देन दैट्स वेयर दे मेक द मनी फ्रॉम। वो जो नेट दिख रहा है, इट गोज़ डीप इनटू द वाटर। देयर आर सो मेनी चाइनीज़ फ़िशिंग नेट्स है। आप लोग रस्सी पकड़ो, मैं पीटूंगा। ओह नाइस। तो क्या करना है वो बताओ। जून जुलाई अगस्त में ज़्यादा मछली आता है। बारिश आएगा ना, इसी टाइम हम लोग को ज़्यादा मछली। टाइम पे आपको टूरिस्ट के लिए टाइम नहीं होता? टूरिस्ट का टाइम नहीं है, टूरिस्ट भी कम है। ये एक साल के कौन से महीने में ज़्यादा टूरिस्ट आता है? दिसंबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। बरसात के टाइम में किस किस टाइप का फिश आता है? आप क्या क्या मतलब कौन कौन सा ये वो हम लोग का टाइगर फिश, कैट फिश, टाइगर फिश, कैट फिश, सिल्वर फिश, प्रॉन्स भी, हाँ, क्रैब, कैट फिश। ओके ओके ओके। अगर आप जाना चाहते हैं फोर्ट कोची से वाइपिन की तरफ, दो रास्ते हैं। नंबर 1 तो ये फेरी है जो आपको लेके जाएगी और आपकी गाड़ी को भी लेके जाएगी। इट टेक्स रफली 10 to 20 minutes टू रीच देयर। एक और रास्ता है बाय रोड विच इज़ 8 kilometers लॉन्ग। यहाँ से कोई ब्रिज नहीं है जिसको यूज़ करके आप डायरेक्टली क्रॉस कर, बिकॉज ये जो जगह है यहाँ से बड़ी बड़ी शिप्स क्रॉस होती है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, यहाँ पे इसलिए कोई पुल नहीं है। दिस इज़ द टिकट फॉर द फेरी। आई एम गोइंग फ्रॉम फोर्ट कोची to the other stop. You have to be in this line for a longer time until the ferry arrives. So I think it's already arrived. Cars are coming out from that side. I'm getting ready to get into the ferry. Alright, so it's time to take an exit from the ferry to the other side. This is actually the cycle zone. I think Chennai is pretty well developed as compared to Bangalore in terms of its road infrastructure. I would say overall public infrastructure. Bangalore की तरह एक और मिसिंग है यहाँ पे चीज़, जो ये है कि ट्रैफिक लगते ही बैंगलोर में सेकंड लाइन और थर्ड लाइन बन जाती है और आने वाले ट्रैफिक को तो कभी जगह ही नहीं मिलती है निकलने की, विच एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू द होल ट्रैफिक केओस। यहाँ पे इट्स अ लिटिल डिफरेंट। ट्रैफिक बंद हुआ तो सबके लिए बंद हुआ। देयर इज़ नो सेकंड लेन, देयर इज़ नो थर्ड लेन। यहाँ पे लोग लॉटरी टिकट्स बहुत ज़्यादा बेचते और खरीदते हैं। जितना मैंने देखा हर किलोमीटर में यू विल हैव समबडी सेलिंग दोज टिकट्स। मैंने किसी से पूछा भी था कि उन्होंने 500 के टिकट्स खरीदे। मैंने पूछा भी था नाम आया है कि आपका कभी लकी ड्रॉ में, बट ही वाज लाइक आई एम नॉट अ फ्रिक्वेंट बायर बट स्टिल आई हैव नॉट गॉट इट, बट आई स्टिल कीप बाइंग इट। तो आई थिंक इट्स अ हैबिट। आई गेस इट्स अ गुड हैबिट देन स्मोकिंग सिगरेट्स। अभी मैं कोची के जू टाउन में हूँ एंड आई हैव द मडनचेरी वाटर मेट्रो टर्मिनल बिहाइंड मी। कल मैं वाटर मेट्रो थोड़ा एक्सप्लोर किया मैंने, 1-2 पॉइंट्स जो है एक्सप्लोर किए एंड आई फील लाइक टुडे वी शुड डू इट वंस मोर सो दैट वी अंडरस्टैंड कि दूसरे साइड्स क्या है इसके जहाँ पे हम जा सकते हैं बाय दिस वाटर मेट्रो। आई थिंक दिस इज़ बाय फार द एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर while also taking care of the nature as well. I think Kerala is way ahead of any other state in terms of water tourism because obviously they have got a pretty fair share of Arabian Sea close to them and then they have their own backwaters. I'm loving Kochi. I'll still try to spend 4-5 hours of my day today in Kochi exploring few other places जो कि मैंने अभी देखी नहीं है and then I will move towards Alappuzha. Thank you so much. Thank you.
I'm going to Wellington Island, which cost me around 20 rupees. I think दिन में इसमें ज़्यादा लोग शायद होते नहीं हैं because it's too hot and humid right now. Evening में yesterday it was full. Both the rides that I took yesterday were actually full. This sounds like खाली खाली. I just arrived here at the Wellington Island. It looks like Wellington Island में कुछ ज़्यादा जगह explore करने के लिए नहीं है. But you have this Binale, which is exhibition. Let's see exhibition में क्या क्या चीज़ें रहती हैं. It's done, huh? This art is from a South African artist, and his intention is to create temporary places for rest or for worship. I think it's overall a good mix of artwork, starting from the African artist up until folk music, the art that's created by the visual artist. Overall, it's a good blend of art that I think is good to explore and good to see. Alright then, let's go. देखते हैं क्या और चीज़ें मिलती हैं हमें. मैं वाटर मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा था तो मुझे मिल गए टूडोर भाई साहब. टूडोर है रोमानिया से और वो एक सेमेस्टर बोर्ड प्रोग्राम पे है जो कि हो रहा है शिप पे. थोड़ी और इंटरेस्टिंग बातचीत की हमने टूडोर के साथ. एडिंग इट हियर. We've done the introduction earlier, but anyways, that's Tudor. Hello, this is me, I'm Tudor, I'm from Romania and I'm here on a semester abroad program. I'm on a ship, it's over there in Kochi port, and I study while on the ship, we take classes and then we travel. We started in Thailand, we're doing across South Asia, around Africa, we end up in Germany. To multiple ports, we're going to 10 different countries. Oh, wonderful. So it's going to be the same ship that you're going to take? Yes, it's going to be the same ship. It's pretty big, it's very nice. I'm very lucky to do this program, I'm very grateful. That's wonderful. Yeah. How long is the program going to be there? Yeah, so we started on January 5th and it's gonna end on April 20th something. That's a pretty long tour. It's a pretty long tour, yes. How about the expenses? Is it regulated by the institution that you're doing the program with, or is it just you who's paying for it? No, yeah, it's a combination of both. So yeah, all my scholarships and extra money gets transferred from my home institution, and I also get a bit of extra scholarship. So I work on the ship, I work as a librarian, so I get extra money from that. So the cost in the end do not, I mean it's still a price, so but it's very nice. I'm lucky to like have the opportunity to do it. Oh, wonderful. Is it going to be the students only across Romania, or? No, most of them are American. The vast majority are American. I studied in the US. Oh, okay. So it's a US basically program, but some European students also go, and we also have interport students. So for example, we had someone, because we were before in Malaysia, and we had 2 Indian students that joined us from Malaysia to India. So they're called interport students. So sometimes, yeah, students from the country we're going to are gonna be for the leg, for one leg with us. Got it. So it basically has other students from other parts who may be just staying with you for a couple of weeks. Yeah, and they're super nice, and they oftentimes they do lectures for us, kind of I guess teaching us about. Right, so they did like for example a presentation, a 1-hour presentation on India as well, which obviously is very brief. There's so much to cover, but they obviously try to like sum up, to like tell us kind of what to explore, what they recommend to do, and so on. And it was very nice. Oh, nice. So are there jobs for everyone on the ship, or is it just a few folks? A few folks. You have to apply for it, and I also worked as a librarian at my home institution, so I got lucky because there was such an opportunity. So there's actually criteria to follow. Basically, you need to have some sort of experience into that role. Yes. Okay. The librarian position was not so competitive, but others are more competitive. So so it was a good coincidence that I also had a similar job. Out of curiosity, how much do they pay you to be the librarian on the ship? Only 4,000. 4,000, yes. 4,000 what currency? $8. $4,000. Yes. For a month, and do you have a specific amount of time that you're gonna spend throughout the day as a librarian? 2 hours a day. 2 hours a day? Yeah, but it's 4,000 for a whole trip. Oh, so throughout the 3 months, right? Yes. For 4 months. For a month.
And from a study standpoint, what are you into? Which kind of degree are you into? So I'm doing environmental engineering. Environmental engineering. Environmental engineering with a minor in film. Now, that's where I understand why do you carry those cameras. I do, yeah. I do try to film around and edit my own footage a bit every now and then. Wonderful. That's Yes. great, yeah. Your education is actually kind of, the curriculum is formed in a way that you get the real life experiences as well. Yeah, exactly. And then exactly. you also study at the same time. Yeah, exactly. So we are encouraged in Port to explore as much of the country we're going to go to museums, to travel a bit, to go to sites, to do tours, right? And kind of genuinely like immerse ourselves and educate ourselves about where we're going, about the current political situation, the current environmental situation. Correct, yeah. And learn from that. Wonderful. I think metro is here. Yes. Cool. It's already having people on board. I think it came from a different station. Yeah, have you taken one of these metros before? Yeah, I did. I explored it yesterday across two stations from I think Port Kochi to some other place. Today I wanted to see this side, so that's what I did. Okay, yeah. No, they're very nice metros. Yeah. Very well air conditioned. It's so nice in there. Yeah. So it's completely electric. Fascinating. I did not know that. I think the new era of ships is going to be certainly different. Yeah. As EVs are getting into the mainstream logistics, we would maybe at some point in time see ships completely powered by sunlight. Yeah, no, I mean, sure. I think there's definitely like problems with that, in terms of clouds, because they're so dependent on weather, and when Correct. you're so isolated on the sea. But I'm sure we can find a way around it. Correct. There would be Like how the fast time. I think I'm not sure if we'll be around. Our kids may be around, but there will be time for I'm that sure, as well. I'm sure. Thank you so much No, for your thank you. time and Yeah, thank you for the interview and thank you for the invite. interest. You're welcome. I'm It's very good to listen to other perspectives, as I said. You can learn from your own experiences, and at the same time, you can learn from the experiences of others. Yeah. Because I don't think everybody has enough time to learn from their own experiences. Undeniably, that's a great way to put it. All right, thank you so much. Let's go. Bad luck, मेरी गाड़ी का चालान हो चुका है. Can't help. मैंने साइड पूरा रखा था गाड़ी, but still they have issued a challan of 250. Let's see how it turns up. चालान के गम को बुलाने के लिए आई वेंट टू द रेस्टोरेंट, हैड सम गुड सी फूड. और इस रेस्टोरेंट के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं सी फूड में. एंड देन यू ऑल्सो हैव अ वेजिटेरियन थाली विच इज़ अगेन द केरला स्टाइल सुदाया मील. ओवरऑल 10 on 10 फॉर द फूड एंड 12 on 10 फॉर द पोलाइट स्टाफ. आई थिंक कोचिन को हम जितना टाइम दें उतना ही कम है, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए. सो बैक वाटर्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. आपके पास वाटर मेट्रो है, देन देयर आर डिफरेंट क्रूजेस दैट यू कैन टेक, बोट राइड्स है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज गुड फूड. केरला ऑलमोस्ट फॉलोज द सेम पैटर्न. आई स्टार्टेड फ्रॉम वायनाड. People are welcoming, people are amazing everywhere, जहाँ पे भी आप जाओ. Since कोची हमने बहुत एक्सप्लोर किया, I think it's time to head to our next stop, which is Alappuzha. It is 56 kilometers from here. 1.5 घंटा यहाँ से लगता है as per Google Maps. And then again, it is also the road that goes next to the sea. So we'll keep exploring as we go along. इस जगह का नाम है चालपुरम और ये आता है एलपी के रास्ते में. यहाँ पे पूरी इसकी ये जो रोड है पूरा कोस्ट पे है, और नीचे कोकोनट ट्रीज, एंड देन वहाँ पे एक चर्च है. सो सेम थिंग, चाइनीज फिशिंग नेट्स ऑल अक्रॉस द कोस्ट. दिस इज अरेबियन सी. मैं ये रोड से आया जो कि बहुत ही क्लोज है टू द अरेबियन सी. यहाँ पे कंपैरेटिवली जो हमने पहली जगह देखी जैसे कोड़ीकोड या फिर कोची, करंट्स बहुत स्ट्रांग है. वेव जहाँ तक आ रही है इट्स ऑलमोस्ट टचिंग दिस प्लेस, और मिस्ट यहाँ तक आ रहा है. अभी मैं पहुँच चुका हूँ अलाप्पुज़ा, और अभी प्लान है कि पास वाले बीच पे जाऊँ.
अभी में मच्छर बहुत है और ओडोमोस में डुबकी लगाने के बाद came to realization that it was a well spent day with a lot of interactions with people and visited different good places including the places at Kochi and also the Alipi beach.